श्री आदिशंकराचार्य विरचित श्री कालिकाष्टकम्। गलद्रक्तमुण्डावलीकण्ठमाला महाघोररावा सुद्रंष्टाकराला विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशी महाकालकामाकुलाकालिकेयम्। भुजे वामयुग्मे शिरोसिं दधाना वरं दक्षयुग्मे भयं वै तथैव। सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रालसद्रक्तसुक्वद्वया सुस्मितास्या शवद्वन्द्वकर्णावतंसा सुकेशीलसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्ते ककाञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभि चतुर्धिक्षुशब्दायमानाभिरीजे विरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणांस्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवु। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणीं शत्रुसंहारणीयम्। वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजांस्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात्। तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवत्ते। जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दं शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बम्। मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्विचित्राकृतिर्योगमाया। न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत्। तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च। गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्तिः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं श्रीकालिकाष्टकं सम्पूर्णम्।